We have met before in other places at other times. I have visited you as many other illnesses, but you kept forgetting my powers. So here I am to shut out the world again, and everyone calls me coronavirus. After the outbreak of novel COVID-19 in China in December 2019, the World Health Organization declared global health emergency as COVID-19 pandemic. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक्स का हाउस ऑफिसर डॉक्टर हूँ। बेसिकली जो कोरोना वायरसेस है ना, दे कॉल्ड कोरोना वायरसेस बिकॉज कोरोना स्टैंड्स फॉर अ क्राउन, ठीक है ना। एंड व्हेन यू लुक एट देम एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो आपको उनके ऊपर अगर आपने फ़ोटोज़ भी देखी हैं तो आपके ऊपर ना स्टैंड एक छोटे ना उनके पास वो स्पाइक्स नज़र आती हैं। दो स्पाइक्स एक्चुअली रिजेंबल अ क्राउन, तो इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर वायरसेस दैट हैव अ क्राउन अराउंड इट, तो उसका नाम कोरोना वायरस वाला है। अब बेसिकली कोरोना वायरसेस जो है ना वो नेचुरली इंसानों में नहीं पाए जाते, दे एक्चुअली ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। जैसे इफ़ आई रिकॉल, तो मर्स जो था ना दैट वाज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पैंगोलिन टू द ह्यूमन। और इसी तरीके से देयर हैव बीन सम स्टडीज, देयर हैव बीन सम साइटिंग्स जहाँ पे ये बात बोली गई थी कि देयर माइट हैव बीन अ चांस कि ये एक बैट से ट्रांसफ़र हुआ है टू अ मतलब ह्यूमन, जो एनिमल मैमल्स होते हैं ना उससे ह्यूमन्स में आया। Basically, it actually is very effective when it comes to spreading through the respiratory droplets. कोई भी पेशेंट होगा अगर इफेक्टिव होगा ना, तो even if you are not showing symptoms, इसकी incubatory time period के अंदर भी you're infectious. Since we have now entered in a new norm that is imposed by none other than the COVID-19, we are all banished at homes, but what makes this virus worst of all? But right now we don't have any vaccine for coronavirus. So all we can do actually is treat the patient symptomatically. In terms of age, most of the times, like 90% of the times, आपके पास वो होंगे जो above 40 हैं, ठीक है। Might have multiple comorbidities like hypertension, diabetes या different जो comorbidities होती है जिसकी वजह से आपके पास immune system already अंडर स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर कोरोना हो जाए तो फिर आपके पास मतलब देयर आर चांसेस कि यू विल गो इनटू ARDS. The confirmed cases and death toll is increasing day by day. Pakistan is also under the umbrella of coronavirus emergency along with 155 countries. Honestly, लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे. I have talked to a lot of patients. कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट हैंड इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है, आइदर ऑन देयर सम फैमिली फ्रेंड और देयर सम फैमिली मेम्बर, ठीक है, तो वो इस चीज़ को मानते हैं। बट पीपल who haven't seen or been interacted with any type of like that patient and are illiterate obviously, तो वो नहीं करते ख्याल। प्लस ऊपर से एक और चीज़ ये भी है कि इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू कीप पीपल इन। एट फर्स्ट जिसको लॉकडाउन के ऊपर ईज किया गया था, आई वॉज हाईली अगेंस्ट इट बिकॉज we were going through such a hard time, patients were increasing. By the time when these cases started erupting, there were an inflow of like 20 patients or maximum 60 patients after the, and it gradually rose to a point कि जहाँ पे 1000 patients per day आ रहे थे. After the lockdown was eased, आपके पास पर डे के हिसाब से it went to 4000 per day, 5000 per day. We went from 25,000 to 75,000 patients within 2 weeks. That was an exponential growth and I was actually scared of it. Obviously I'm scared. हम लोग यहाँ आते हैं, ड्यूटी करते हैं, we get exposed so much and when we have to go home, हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, we might infect them. As the novel coronavirus pandemic rages on, many myths and misconceptions have taken hold of public imagination, partially due to social media and partially because of a lot of what we know about the virus changes on daily basis. बेसिकली जो सिंपल कोल्ड होती है ना, उसके सिम्टम्स और कोरोना वायरस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बट वन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो आते हैं ना आपके पास,
रिगार्डिंग विद कोरोना वायरसेस वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू गेट हाई फीवर. नॉर्मली आपके पास वायरसेस जो होते हैं ना, दे कॉज लो ग्रेड फीवर्स. इट्स जस्ट अ वायरस ऑनेस्टली. अगर ये गर्मी की वजह से ख़त्म होता है तो जस्ट थिंक अबाउट दिस वे कि व्हेन इट्स इन योर बॉडी स्टार्ट्स टू गो थ्रू हाइपरथर्मिया. ठीक है, पायरेक्सिया जो होता है, फीवर जिसे कहते हैं हम. वो फीवर क्यों होता है? ये बॉडी एक्चुअली रेजेज इट्स कोर टेम्परेचर टू fight off any infections. We've been actually working with 24 hours calls, 18-hour calls, 12-hour calls, back-to-back calls. I don't understand how anyone can say कि हम डॉक्टर्स खुद जान किसी भी पेशेंट को मारेंगे. We can break the chain of the spread and ensure the safety of all by keeping a safe distance and washing our hands often. इवन विद द इंटायर थिंग, जहाँ पे पेशेंट्स बाहर जा रहे हैं और काम, मतलब जहाँ पे लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आई थिंक दे कैन गो आउट. ठीक है, बट इफ़ दे एक्चुअली फॉलो द SOPs प्रॉपरली, मे बी इन द अपकमिंग सम टाइम हर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाए. हर्ड इम्यूनिटी इज़ समथिंग व्हेन द वायरस वोंट हैव एनी मोर न्यू वेक्टर्स टू फाइंड. इतने लोग रिकवर कर जाएंगे कि उसके पास कोई न्यू वेक्टर्स नहीं होंगे, एंड द फ्यू बंच ऑफ पीपल हु नेवर गॉट इन्फेक्टेड will get some sort of immunization, herd immunization, because of no more vectors around them. We live in the same world you do and face the same challenges with these pandemics. However, we dare to come out, not only to save the vulnerables and ignored members of our society, but we youth have a responsibility and we know our duty. We have to work as a team to fight off this infection.